सांस की जानकारी बनाए रखते हुए वो हम प्रयास करते हैं सारे शरीर में मूवमेंट को जानने का। बेली और चेस्ट रीजन में हम कल ठीक से देख चुके हैं। लेट अस नाउ सी द आर्म्स, अपने हाथों में, हाथों की उंगलियों तक। जैसे जैसे हम सांस के आवागमन के साथ साथ शरीर के अंदर बदलाव को जान रहे हैं, उसी तरह से हाथों में भी आप एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का भाव महसूस कर सकते हैं। और सूक्ष्म स्तर पे होता है हाथों में भी, पूरे टांगों में, राइट अप टू द टोज। तो प्रयास करके देखिए क्या हम इस सारे धड़ में वायु धातु का जो इफेक्ट है उसको पहचान सकते हैं। तो ये अभ्यास की बात है, थोड़ी देर इस तरह से अभ्यास करते हैं। सांस भी आ रहा है उसको जान रहे हैं, और उसके साथ साथ चेस्ट में, बेली में, उसको तो जान ही रहे हैं। अभी हम कुछ अभ्यास तो किया ही है उसका, थोड़ी देर उसका अभ्यास करें और फिर साथ साथ हाथों को देखना, जंघा को, टांगों में और पांव तक की उंगलियों तक प्रयास करके देखते हैं। अगर सूक्ष्मता ज़्यादा हो और चित्त उतना स्ट्रांगली कभी कंसंट्रेट नहीं हुआ है, तो एक दो सांस, गहरे सांस लेके भी एटलीस्ट अनुभव किया जा सकता है। तो वो भी ट्राई कर सकते हैं।
अगर सहज भाव से हो जाता तो नथिंग लाइक इट, बट जस्ट टू एक्सपीरियंस दैट दिस इज रियली ट्रू, we can take 1 or 2 deep breaths and actually feel the movements happening in whole of the body. तो मूवमेंट भी उसी तरह की हैं, पुशिंग, कमिंग बैक, एक्सपैंडिंग, रिलैक्सिंग, एक्सपैंडिंग, रिलैक्सिंग। और ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि अनुभव के आधार पर जान जाए कि वायु धातु भी सारे शरीर में व्याप्त है। जैसे पृथ्वी धातु का हमने अनुभव पे जाना, वैसे ही वायु धातु को भी जान सकते हैं, सारा शरीर में वो व्याप्त रहती है। सारे शरीर में ये मसल्स जो हैं उनके अंदर ट्विचिंग होती रहती है, और उसके कारण, और ब्लड फ्लो होता रहता है, उन सब के कारण एक एक फैलाव और सिकुड़ाव होता रहता है। वास्तव में सिकुड़ाव नहीं है, फैलता है और फिर वापस रिलैक्स होके अपनी पोजीशन में आ जाता है। क्योंकि जो मूवमेंट हो रही है सारी शरीर में, भोजन की, हवा की, जैसे हमने कल देखा, वो एक इसी तरह से जो फैलाव सिकुड़ाव के माध्यम से होता है, उसी तरह से सारी मोशन हो रही है, सारी मूवमेंट उसी तरह की है। इसीलिए वायु धातु का जो सिम्टम कहा जाता है, मैनिफेस्टेशन पुशिंग कहा जाता है। अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे अभिधम में, तो वायु धातु के 2 सिंबल बताए गए, पुशिंग और उसका अपोजिट सपोर्टिंग। उस पर भी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अभी पुशिंग को ठीक से हम अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं।
यदि आप अनुभव कर पा रहे हो सारे शरीर में तो अपना वर्चुअल हैंड पे रेज कर दें ताकि मुझे मालूम पड़ जाए। And keep your virtual hand on so that I know when to take the next instruction. जो लोग अभी शरीर में महसूस कर पा रहे हैं, you can also try to note it in the inside the head और sensitivity से as the breath goes in you'll see slight expansion happening there, very minute but discernible, so that every part of the body is covered.
एक आप वर्चुअल हैंड को बंद कर सकते हैं। कैन वर्क इन रिलैक्स्ड मैनर। दिक्कत हो रही हो हल्के सांस में, जैसे मैंने निवेदन किया, 2-3 गहरे सांस लेके हम अनुभव कर सकते हैं कि सारे शरीर में वायु धातु का इफेक्ट रहता है।
शुरू शुरू में तो ये जानकारी कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी। एक सांस आया तो सब जगह मालूम पड़ा, दूसरा सांस आया तो कुछ जगह मालूम पड़ा, कुछ जगह नहीं मालूम पड़ा। तो उससे बेचैन नहीं होंगे, डिसअपॉइंट नहीं होंगे। विनय लोके विद्यादो मनस्सु आतापि संपजानो सतीमा। So keep on practicing, noting down, not create any reaction as far as possible. और यदि हम लगातार देख पा रहे हैं पार्ट्स में, so then we can relax and look at the whole body in one sweep. सारे शरीर को एक बार देख के and try to feel कि सारे शरीर में एक साथ भी, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज रहती है सांस के साथ,
तो एक रिदमिक मूवमेंट सारे शरीर में हो रही है, इंक्लूडिंग द हेड. We can try to feel that.
Open our eyes and relax for a minute or so. और यदि कोई डिफिकल्टी हो करने में, समझने में, तो पूछ सकते हैं. There's one thing I've noticed is that, and maybe you've responded to it because आज मुझे देर हो गई थी join करने में. One thing I've noticed is that sometimes movement is a consequence of the attention going to a certain part. So जो इससे मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ वो ये है कि the experience of रूप, in this case the presence of that particular element, is conditioned upon the presence of attention. So is that fair? That's the question. Not really, because if I am not noting, it doesn't mean it's not happening. And it is such a strongly autonomous system. It's because breath is coming anyway, and that is coming because there is a movement happening. So everything else is also going to happen. हमारी sharpness of observation नहीं है, तो इसलिए वो मालूम नहीं पड़ता है. क्योंकि आज से पहले तो हमने कभी नोट तो किया ही नहीं हमने, तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि हो नहीं रहा है. I think maybe my question is slightly different. Maybe I'll try and say it differently. एक तो जो आप कह रहे हैं, एक तो वो स्थिति है कि हम नोटिस कर रहे हैं, so that's one. Does it, so maybe I'll break it into two parts. Is it possible that one of the factors that conditions movement is the presence of attention? ये बताइए आप. Breath तो ठीक है, that we understand, and many other factors है ना, जैसा आपने बताया है. But is that also possible? Then I'll ask the follow-up depending on your answer. Are you talking of this particular observation or observation in general? In relation to the body. Yeah, in relation to the body, if there is this equanimity is maintained and कोई reactivity नहीं हो रही, so the body has its own autonomous systems which work accordingly. There's a phenomena of homeostasis which keeps the body in equilibrium in various ways. And it goes on happening, whether we are aware of it or not aware of it, or it happens continuously. Correct. No, our awareness may put, because our awareness is always tinged with some craving or aversion, that may cause some changes in it. Right, exactly. So the presence of attention can bring about some additional, not attention, but presence of craving and aversion. Attention is ethically neutral. Okay, ठीक है. Let me think further. Yeah. ठीक है. Thank you. Very good. हाँ जी, पायल जी बोलिए. सर, स्वीपिंग भी क्या वायु धातु करता है? वो भी अगर स्वीप हो रहा है बॉडी में, इज दैट आल्सो बिकॉज ऑफ वायु धातु? स्वीप मतलब जैसे अभी आपने बोला बॉडी पार्ट में जैसे पल्सेटिंग, जो अभी कॉन्ट्रैक्शन और वो फील होता है, दैट इज वायु. बट जब हम ऊपर से नीचे पूरा देखते हैं, पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऐसा भी लगता है ना कि कुछ something is going forward and back when we come up backward. तो वो भी वायु? No, that is actually a result of our, because जब कोई फिनोमेना बहुत तेजी से होते हैं कोऑर्डिनेटेड, तो वो एक
फ्लो सा महसूस होता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि हम एक लाइट को लेके अगर घुमाएं और बहुत तेज घुमाएं जो हमारे परसिस्टेंस और विजन से ऊपर हो जाए, एबिलिटी टू डिसाइफर से, तो हमको सर्कुलर कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म लगने लगता है। नियॉन साइन जैसे होते हैं उनमें मूवमेंट लगती है, वो सिंक्रोनाइज्ड लाइट्स का जलना और बुझना होता है। सेम एज यू कैन से synchronized arising and passing away, it gives the appearance of a flow. So it is that. Okay. क्योंकि फ्लो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जल धातु, आपो धातु। अच्छा, that is not वायु जो स्वीप, क्योंकि मेरे को लगा movement is वायु। No, it is movement of this kind of a movement, distension and Contraction. movement. हाँ। Flow is a different thing. One is actual movement, other is which mimics a movement, which appears like a movement, but it's not actually a movement. लगता है ऐसे कि कुछ फ्लो हो रहा है, कुछ होता नहीं है फ्लो, ऐसे महसूस होता है। और फिर हमारी जो उसके प्रति क्रेविंग है और उसकी जो कॉन्सिक्वेंस है, उससे फिर वो चेंजेस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। अच्छा सर, ये जो एक और वो है, जैसे जब हम वायु धातु देखते हैं तो पोर्शन पार्ट में तो दिखता है, पूरी बॉडी में फ्लीटिंगली दिखता है जैसे। इट टेक्स, वो मैं अभी अनुभव ज्यादा होगा, खूब करेंगे प्रत्येक, तो देन वील बी एबल टू कंटिन्यूअसली फील इट। दैट्स ट्रू। ओके। कभी दिखता है, फिर कभी अगली बार में नहीं दिखता, एक सांस में दिख जाता है, दूसरे में नहीं दिखता, दिस काइंड ऑफ अल्टरनेशन हैपेंस। ओके, थैंक यू। रेणुका जी, आप कुछ कह रही हैं? सर मेरा क्वेश्चन कल जो डिस्कशन हुआ था उसके रिलेटेड है। अपने हाथ किया हुआ था ना, इसलिए मैंने समझा शायद। यस सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर मैं ऑडिबल? यस। कल जो डिस्कशन हुआ था उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। कल आपने कहा था कि नेचर हैज इट्स ओन प्लान, देन हमारा रोल क्या हो सकता है? कम्मा, इसका क्या रोल होगा? नेचर प्लान्स मींस कम्मा विपाक। When I use that meaning, I meant कम्मा विपाक के अनुसार से परिस्थितियां अपने आप क्रिएट होती रहती हैं। हम उस कम्मा विपाक के प्रति हमारी इस समय, क्योंकि एक सेंस ऑफ सेल्फ है, हम उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे भविष्य का कर्म बनता है। सर फिर आई एम द ओनर ऑफ माय कर्मा, ये कैसे जस्टिफाई होगा? ये तभी होगा जब मैं कर्म करूंगा। मैं कर्म तभी करूंगा जब मेरे में सेंस ऑफ सेल्फ होगा। ओके सर। जो मैं काम सेंस ऑफ सेल्फ के हिसाब से करूंगा, उसका फल भी आएगा और वो इसी चित्त धारा में प्रकट होगा। जो चित्त धारा इस समय मेरे शरीर के माध्यम से प्रकट हो रही है, उस चित्त धारा में मेरे इस समय के कुशल अकुशल कर्मों का एक इम्प्रेशन पड़ा रहता है, बनता रहता है। एंड देन इन ड्यू कोर्स, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉज, जब उसका टाइम आएगा तब वो मैनिफेस्ट होगा, उसका विपाक आएगा। सो जो विपाक आएगा उसी को कहा जाता है कि मैंने कुछ कर्म किया तो उसका विपाक जरूर आएगा। So sir, present situation, yes sir. जो अब वो डिपेंड करता है कि वो कैसा कर्म है, उसका फल इमीडिएट आएगा कि लॉन्ग टर्म आएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कर्म। Sir, if I could ask for a clarification, हाँ, few situations will be like हमने कर्म किया इसलिए ऐसे situations बने. I mean to say, our actions इस तरीके के consequences को lead किए. But when we retrospectively reflect or try to understand the sequence of events, it is clearly understandable that
though my actions are significantly present, but they are of not huge nature that they could result into this kind of outcomes. You are only thinking of the actions of which you are aware. There is past life impressions going on. चित्रधारा तो लंबी है ना, बहुत इनफाइनाइट टाइम से चली आ रही है। तो जो हमारी इस समय की परिस्थितियां हैं वो किस कर्म का विपाक है, यू कांट नो दैट। कुछ इसीलिए कहा कुछ कर्म ऐसे हैं जिसका इम्पैक्ट जल्दी होगा। अगर मैं चोरी करूंगा तो काफी पॉसिबिलिटी है मैं पकड़ा जाऊंगा, और अगर मैं इस जन्म में नहीं पकड़ा गया तो उसका असर जरूर मिलेगा मुझे। अगर मैं पकड़ा भी गया तो फिर भी उसका जो माइंड पे असर पड़ा है उसका असर, उसका विपाक होके ही रहेगा। कब होगा ये कह नहीं सकता। सो देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी इन दैट। हम तो जानते हैं वो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना हमारी मेमोरी में है, जो हमने इस जन्म में काम किया है। वो भी हमको कितना मालूम है, कितना हम उसको ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि हम अपने पर, हमारा तो बायस रहता ही है ना। सो अवर अवेयरनेस ऑफ द my contribution to my conditions at the moment is always colored by my sense of self, by my love for myself. To be able to see my own shortcomings is very difficult. So that means I have that great objectivity, and that sati is there to such an extent that I'm able to see this was my error, this is what I did wrong. Usually it's quite difficult because हमारे sense of self जो है filters लगा देती है। So you can't really pinpoint कि ये मेरी जो इस समय की परिस्थिति है ये ठीक नहीं है, ऐसी होनी नहीं चाहिए थी, ये कुछ गड़बड़ हो गई लॉ ऑफ नेचर में, क्योंकि मैंने तो अभी कुछ काम किया ही नहीं। Yeah, this people face so much unexpected consequences. People are born with so much defects, congenital defects. उन्होंने बेचारों ने क्या किया है कोई कह सकता है ना। कोई गरीब के घर में पैदा होता है, कोई अमीर के घर में पैदा होता है, ये तो सरासर अन्याय है। One can say that. Yes. So that's the, we can't really prove or disprove it unless as we have that abhinya to be able to find out कौन किसके जन्म में क्यों किस कारण से हुआ। So that is the meaning of karma. So the way to understand it's like हमारे limitations को हम समझे and passively accepting the situation. Yeah, you have to accept that we cannot break and penetrate into the law of karma. So whatever situations are there at the moment in my life, they are the karma vipaka. And now what I do with those situations will be my future karma. So with that understanding, I can respond wisely. कि भाई अभी तक बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशन है, अब तो मैं कम से कम सती और संप्रज्ञान के हिसाब से, सती और पन्या के हिसाब से रिस्पॉन्ड करूं ताकि अपना भविष्य तो सुधरे। That's the way I understand it. Yeah. What would be the better understanding जब ये situations challenge when you are acquired little bit of understanding? What would be the better way to take them? Is to see, that's what I said, na? To understand that Buddha's teaching says that whatever we experience in our life is the result of our karma. जो भी सिचुएशन आती है, यहाँ तक कि जो मैं देख भी रहा हूँ, जो मैं सुन भी रहा हूँ, if you believe in Abhidhammic studies, then it says, in fact, not only Abhidham, this part comes even in suttas. Your eye is your karma, your ear is your karma, your body is your karma. This is sutta ka part. So whatever I hear or listen or smell is a karma vipaka. And I don't know why it is happening. I can't figure it out. It's impossible. इसलिए भगवान कहते हैं कर्म विपाक अचिंत्य। Should not think about it कि इस किस कर्म का फल ये आया है। Impossible, because there's
so much complexity in the phenomena. और कर्म का फल जो इस आता है वो मेरे इस समय की मन की स्थिति पर भी डिपेंड करता है. So you can't really figure out. So in all humility we accept कि ये परिस्थिति जो आई है मुझे इस परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए to improve my sati, to improve my, make a wholesome karma, or better not make any karma at all. Handle this situation with sati and panya as far as possible, not letting myself view and my sense of self decide what I should be doing and not. Let it be decided by wisdom, whatever wisdom is available with me at this moment. Okay, so then you will be doing the best possible thing at this moment. Because मेरी पन्या भी तो इस समय लिमिटेड ही है ना, तो Yes, जितनी sir. पन्या होगी उतना ही करूंगा. बट हाँ, अगर मैं कोशिश करता हूँ खूब सजग रहने की, प्रज्ञा का बढ़ाने का अभ्यास करता हूँ, तो जो इस समय की मेरी बेस्ट पॉसिबल रिस्पांस हो सकता था वो उससे एमर्ज हो जाएगा. एंड दैट्स द Okay. बेस्ट थिंग आई कैन डू. उससे ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकता ना. अगर मुझे 5 साल बाद पता चलता है यार मेरे से ये गलत हो गया काम, तो आई कैन सी I didn't have enough panya at that time. That's okay. Okay, sir. So Thank I you so much. work in that manner so that I do whatever is best possible under the present circumstances. Okay? So one more follow-up question is there. Okay. So Yes, bolo. the desire to do, I mean, most appropriate kind of action, if that is hindering and that is creating tension. If it is taken again with a strong sense of self, again it will create Yes, sir. a difficulty. We have to submit ourselves to the laws of nature. Humility is the most important thing. And whenever we see any sense of self arising, we put it. Desire arising, we put it out. Howsoever noble the desire may be, if we have to really do the best possible thing. Of course, with desire arising, you may get a bit tense, but then you may be more careful. You may try to see कि भाई मेरी प्रज्ञा ठीक है कि नहीं, मैं बहुत सब सजग हूँ कि नहीं. So to that extent, it may help. But if it is, it is masquerading our narcissism, our self-love is masquerading as desire to do the best. No, that's something which is to be penetrated. क्योंकि मन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, हमारा बाहर से क्या विचार है, अंदर से क्या विचार है, जो डीपेस्ट इंटेंशंस है वो हमको डिसर्न नहीं कर पाते जब तक कि हमारी साधना बहुत स्ट्रांग ना हो. तो इसलिए as a working stuff, submitting to the nature, submitting to triple jumps. Whenever there's a very crucial decision to be made, you sit kindly, sit silently, practice something. You can practice paritta, you can practice metta, you can practice anapana, so that mind settles down. And when mind is settled down, then decide what I should do. Seek guidance. What should be the best way I should respond to this situation? One of our teachers mentions this point that when you're caught in a very difficult situation, many of us get caught, then you silence the mind, calm down the mind, and put inside your mind this, what should I do now? And wait for the answer to emerge. That usually is the best possible strategy at that time. Now, if you apply your mind, no, there could be something better, then obviously you don't have faith in the purity of mind. Then you have faith in your own intellectual ability. So you have to really
learn by trial and error. We learn and do it like. खास तौर पर जब बहुत serious problem हो और decision लेना हो, this is a very safe way which I have found, which I mean I have applied. It I not I have found. I have been taught the very safe way of taking difficult decisions. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Yes. So best wishes. Thank you, sir. हाँ जी दीपक जी बोलिए. मेरी ये रिक्वेस्ट है जी कि ये जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इसको कुछ थोड़ा सा ऐसे ही और चलने दे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है मेरे जो साथी हैं उनकी ऑब्जर्वेशन कैसी है. एटलीस्ट आई कैन विजुअलाइज द मूवमेंट द टॉर्सो, बट आंख में थोड़ा थोड़ा कभी दिखता है कभी नहीं दिखता. जो टॉर्सो से दूर है वो तो बिल्कुल ही कैप्चर हो रहा. इसलिए आई थिंक वी शुड कीप ऑन. Yeah, we can practice more. Yeah. हाँ, दिस इज माय रिक्वेस्ट. इस कनेक्शन में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं. जी. हम ये साधना कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन सीइंग द एलिमेंट्स as much in detail as possible and understanding that it is this element or that element. जी. Right? So is that seeing in that much detail as important or less important or equally important as the dhamma which is about it? Because ultimately as a dhamma which we must do about it. Okay, in the process of seeing we get lost in seeing this. तो भूल जाते हैं कि इसका purpose क्या है. हाँ, we should remember it, of course. We are practicing, you can say we are practicing dhatu manasikara babbam. That portion of instruction of Satipatthana we are practicing. Period. This is a teaching given by the Buddha in a very prominent sutta. We are practicing it. So साथ-साथ होना चाहिए ना. जी. साथ-साथ होना चाहिए ना दोनों. समझा नहीं मैं. मतलब वो सीइंग भी होनी चाहिए, विपश्यना भी होनी चाहिए और ये धम्मविचय भी होना चाहिए साथ-साथ. विपश्यना क्या हुआ? मतलब देखा आपने कि वाइब्रेशन ये एयर एलिमेंट को देखा आपने. देखने से हमने क्या सीखा इसके बारे में भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना हमें. नहीं, वो तो we have discussed it in the full quite substantial detail. I thought अगर नहीं तो point is not that. Point is in the process of seeing you get so absorbed in seeing that you forget this aspect. Yeah, we should. I hope not. If we can keep it in memory. That's all I can say. कि क्यों हम कर रहे हैं वो क्लियर हुआ ना. I thought it was clear कि हम इसलिए कर रहे हैं कि रूप के वास्तविक स्वरूप को जान सकें. Conceptually तो we know. Iti Rupang. That is the first statement. Iti Rupang. And what is Rupang? Buddha himself tells us. Chattaro Mahabhuta. Upadaya Rupaya. Chattaro Mahabhuta. Mahabhuta Upadaya Rupaya. Iti Uchyate Bhukkhave Rupang. So just follow those instructions. जी? Let me put the questions in a slightly different way. हाँ जी बोलिए. I can orient my sadhana to seeing as much detail as possible. Yeah. Or I can balance it with, okay, I'm seeing this, but not that much in detail. But within whatever I see, I can remember that this is the purpose of this thing. I may not be able to see in that much detail. Yeah, that is there a balance required, or one should see? Actually, I thought the remembering part was always happening. But we had already understood that this is the purpose of all this exercise. If we are not remembering it, then obviously we can remember it. So, but the whole idea is that actual experience of these elements will break the illusion of the body being a solid entity. That's the whole idea.
So for that purpose, we don't need reflection. We need direct seeing. For example, when we come to water element, we will not be able to experience it. Then we'll have to reflect. Then we'll have to draw inference. मैंने शुरू में कहा था ना कि we have to do two kinds of practices. One is what we can directly observe, and second, what we can't observe, we have to do it by inference. जी. So in water element, we'll have to do by inference, because by touching water, you can't find that it doesn't have water properties. So there's a problem with water element. That's why it is seen to be very difficult to practice in that sense. But with others, I thought it was quite obvious. But of course, if we have it and if we feel we are losing sight of the overall purpose, it's good to remember it. Yeah, certainly. Thank you. सर एक छोटा सा सवाल, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेंशन और जो ओरिजिनल स्टेट को वो आ जाता है, वापस आ जाता है, तो क्या मैं उसे ऐसा कहूँ कि वो पृथ्वी धातु में आ जाता है, ऐसे बोलूं? ऐसा हो सकता है क्या? मतलब अभी नहीं, वो फिर वही उसको ना धातु को कोई चीज मानना चाहती है। सर धातु का मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं तो हाँ, उसको सॉलिड तो है ही है ना। yes, it comes back. सॉलिड तो है ही वो। Whatever So then you observing, have a recognition of air element and then Prithvi yeah, Dhatu. you can do that. After all, whatever we are observing is a solid entity. We know that. Because अभी तक तो हमको वही महसूस हो रहा है ना। So that is it has you can say it has the nature of solidity as well as the nature of movement. No, that's how we should speak. Yeah, certainly you can do that. Okay, thank you. So we request Bhanteji. So may we remember that which has to be remembered, and maybe have the wisdom to not get lost in those aspects of the sadhana that are pointers. Sambuddho Bhagavan Bhagavantam Abhivadu Samadhatu Bhagavatam Namassam Supatipanno Bhagavate Sāvaka Sangho. जी तो हम सभी 3 बार प्रणाम करेंगे। प्रथम प्रणाम, द्वितीय प्रणाम, तृतीय। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much.